Hello everyone, welcome to my channel. This is Rasmin and Diwali is just around the corner, so come let's try 3 DIYs. For the first DIY, I'm using a plain sheet of cardboard. First we'll draw a flower and then cut it out. Then I'm using this plastic spiral and gluing this on the flower with the help of glue gun. Then we will paint it white with the help of an acrylic paint. I'm using silver metallic paint for the glitters so that it gives a festive look. Then we are going to decorate the petals with the help of small round mirrors and also with some flowers. Voila, our tea light holder is ready. Isn't it looking pretty? Come let's check the second one. For the second DIY, I am using a Amul butter container. So first we will make it a hole for hanging. For that I am using a pin hole. With the help of a hammer you can just make a hole. Paint it with the help of a spray paint. Now we will decorate the edges with square mirrors and glue gun. For hanging purpose I am using a nylon. We will put the nylon thread inside and put a knot. 2 to 3 knots so that it doesn't come out of the hole. Voila, our second tea light holder is ready. मैंने यहाँ पे रियल कैंडल्स यूज़ किया है, बट प्लीज़ आप मत करना. आप वो LED, आप वो बैटरी का जो टी कैंडल्स होता है वही यूज़ करना, कॉज रियल वाले यूज़ करने की वजह से वो हीट हो जाता है. हीट होने के बाद वो ग्लू गन मेल्ट हो जाता है. सो प्लीज़ ग्लू गन मेल्ट होते मिरर सारा गिर जाएंगे. सो प्लीज़ यूज़ दैट काइंड ऑफ LED LED टी लाइट्स. ओके. For the third DIY we'll need a lot of spoons. Spoons आपको ये प्लास्टिक स्पून्स आपको 10-15 रुपये में पैकेट्स मिल जाएंगे. उसमें काफ़ी सारा होता है. सो यू कैन ट्राई विद दैट. सो वो नेक्स्ट वी विल नीड अ लाइटर. उस आपको हल्के हल्के उसको क्या करना है, आँच देना है सो दैट वो थोड़ा मेल्ट हो जाए और वो पेटल का शेप ले ले. नेक्स्ट वी विल कट दैम एंड देन एक राउंड कार्डबोर्ड को काटने के बाद उसके ऊपर ग्लू गन से हम उसको पेटल्स को फ्लावर की तरह लगाना शुरू करेंगे. मुझे ये रो शेड बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है. मतलब लिटरली जस्ट लुक एट द कलर विद ब्लैक प्रिंट, ओम्ब्रे इफेक्ट दे रहा था. इट्स सो प्रिटी. नेक्स्ट हमें स्प्रे पेंट कर देना है. आप ज़्यादा मत यूज़ कीजिए, एकदम हल्के हाथ से कीजिए. जस्ट लुक एट द पेंट, इट्स लुकिंग सो प्रिटी. वो जो लाइट इफेक्ट दिया है उसमें गोल्डन कलर का, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. डू लाइक दिस वीडियो एंड लीव योर कमेंट इन थॉट्स. बाय.